Hi everyone! Welcome back to our channel Vedantu Commerce. This is your accounts master teacher MLA Sheetal Chaudhary, and I welcome you all once again to our channel Vedantu Commerce. So, in case you guys are new to our channel or if you are watching this face for the first time, then please take a moment to hit that red icon to subscribe our channel so that you can watch more such live classes of ours. Also, if you have not liked the video yet, then please show some love and like the video, hit that thumbs up button below and do share it with your friends. Now, you all must be thinking कि मैम हमारे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है. So let me tell you that this is a premiered session, this is a recorded session, so I won't be able to reply to your messages. But if you guys have any doubts throughout this class, then you can write down all your doubts in the comment section, not in the chat, in the comment section. So this is the class 12th accountancy session. This is Lakshay batch session. And what are we going to have? So first of all, before starting anything, let me tell you that on this Diwali, Vedantu have some special things for you, some special surprises for you. So what we have, let me show you. So now you can download our mobile app. You have to download our mobile app first of all. So download our mobile app and update your profile. एक minute. So you have to download the mobile app, and when you will download it, you will see this on the home page. Then you have to update your profile. You have to enter your details, your class, your board, your stream. After that, go to my content. After updating your profile, go to my content, and there you will find these tests. And we are providing you so many tests for your term 1 preparation. So you can attempt these tests now to improve your term 1 percentage. So this is the surprise for you. This is something special for you only. So what are you waiting for, guys? Go and download our mobile app quickly so that you can also avail this benefit. And so we have provided all the links in the description box below. You can join our term 2 courses also now. So our term 2 courses are live now. So go and check out the link quickly to enroll for term 2 courses. And not only this, if you want to revise the term 1 syllabus again, अगर आपको टर्म 1 का सिलेबस दोबारा से रिवाइज करना है तो आप हमारा टर्म 1 का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो. यू कैन ज्वाइन our term 1 crash courses also. So CBSE Commerce term 1 crash course, the link is again given in the description box. So go and enroll now because right now we are providing you flat 55% off. And this is a limited time offer. This is only till Diwali. दिवाली के बाद ये डील दोबारा देखने को नहीं मिलेगी. So before this deal ends, go and grab this quickly by using my code SCPRO. So go and use my code to get flat 55% off on all the crash courses. Now, this is revision time. As you all know, we are solving the sample paper. So, we have already solved till question number 37. हमने कहाँ तक सॉल्व कर लिया था लास्ट क्लास में? टिल क्वेश्चन नंबर 37. नाउ वी विल डू 36 क्वेश्चन तक कर लिया था. So now we will do question number 37. We will do part C today. So, are you all ready for this class? Yes or no? Are we ready, guys? Are you ready? तो क्या आप लोग ready हैं? And I can't read your messages, but I know that
all of you are ready. So let's start the class. Let's start it. And this is a very good part. This is a good section of the question paper because questions are all different. मतलब अलग ही लेवल के क्वेश्चंस हैं इस सेक्शन में. सो आई एम इन लव विद दिस सेक्शन. थोड़ा आपको लगेगा कि थोड़ा ट्रिकी है, बट दैट इज सुपर अमेजिंग गाइस. मतलब क्वेश्चन तो मजा ही आ गया मुझे करके. आप भी बताइए कि आपको कैसा लगा ये सेक्शन इन द कमेंट्स बॉक्स. टेल मी हाउ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सेक्शन सी. So let's see the first question. Okay, as I have told you, we are doing part C of part 1. We are doing section C of part 1. There are 5 questions in this from 37 to 41. So there are 5 questions in this: 37, 38, 39, 40, 41, out of which you have to attempt 4 questions. Okay. So let's see the first question of case study. तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. And you can see कितना बड़ा क्वेश्चन है. I'm sorry. So I will be invisible क्योंकि अगर मैं visible होंगी तो question visible नहीं होगा. Now on this question, on this case study, you have 2 questions. 37 and 38, both the question are based on this case study. So we will read it very carefully, we will analyze it, and then we will answer the question. So please be very careful guys, please read each and every line very carefully. And if you guys have any doubts in any point, then you can ask it in the comments box. So let's see the question. Question is, Bright Star Limited is engaged. Bright Star Limited is engaged in manufacture of high-end medical equipment. They are dealing in medical equipment. Considering the prospects of high growth in the segment, the company has decided to expand. The company has decided to expand. Company को अपना business बढ़ाना है. And for this purpose, additional investment of rupees 50 lakh is required. कंपनी को रोकड़ा चाहिए, कंपनी को पैसा चाहिए 50 करोड़ रुपीस. Investment is required, money is required 50 crore rupees. Now, directors have decided that 20% of this requirement, director decided that 20% of this requirement, 20% means 1 by 5. So 20% of 50 crore, 20% of 50 crore will be 10 crore. 20% 1 by 5 of 50 crore will be 10 crore. So 10 crore would be financed by raising long term debt. ये पैसा कहाँ से आएगा? डिबेंचर से आएगा, डेट से आएगा. And the balance by issue of equity shares. The balance 80%, the remaining 40 crore rupees, the remaining 40 crore rupees will be financed by equity shares. So out of 50 lakh, 10 lakh will be raised through debentures, 10 lakh आएगा debentures के through, and 10 crore will come through debentures, and 40 crore rupees will come through equity shares. Now, as per memorandum of association of the company, as per MOA, the face value of equity share is 100 rupees. The face value of equity share is 100 rupees. Also, considering the market standing of the company, also considering the goodwill of the company, these shares would be issued at a premium of 25%.
सो इशू प्राइस कितना होगा बच्चों? इशू प्राइस विल बी 100 plus 25, 125. The shares will be issued at 25% premium. Now, this is the main line. Directors decided to issue sufficient shares to collect the desired amount. Director decided to issue shares to collect the desired amount. Now, please pay attention. हमें कितना पैसा चाहिए थ्रू इक्विटी शेयर्स? हाउ मच अमाउंट इज रेज्ड थ्रू इक्विटी शेयर्स? 40 crore rupees. So 40 crore rupees will be divided by issue price. You will divide the amount required, 40 crore, by the issue price, that is 125. Now you will get the number of shares. So 40 crore divided by 125. How many shares the company will issue? Company will issue 32 lakh shares. How many shares the company will issue? Company will issue 32 lakh shares. तो कंपनी कितने शेयर्स इशू करेगी? 32 लाख. देन इट इज सेड दैट द प्रोस्पेक्टस वाज इशू टू द पब्लिक. शेयर्स इशू कर दिए एंड द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 2 lakh rupees. So issue is over subscribed. Now it is over subscribed. मतलब we received 32 lakh applications and we also received 2 lakh more applications. It is oversubscribed by 2 lakh. It means 2 lakh more applications are received. So we have received total 34 lakh applications. How much applications are received? 34 lakh rupees. Now, how much application money will be received? How much total application money will be received? So, applications are received for 34 lakh shares. Applications are received for 34 lakh share and the issue price is 125. So, on 34 lakh shares, we have received 125 rupees. So total amount received is 42,50,000. हमें टोटल एप्लीकेशन आई 34 लाख. एक शेयर का प्राइस था 125 रुपए. तो टोटल पैसा कितना आया होगा? 42,50,000. दिस इज योर एंटायर केस स्टडी. ये था आपका पूरा केस स्टडी. नाउ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज हैव अ लुक एट इट. प्लीज क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखो, रीड इट, एंड देन वी विल बी कमिंग ऑन टू द MCQ, to the question. So amount required, the total amount required was 50 crore rupees. Out of 50 crore, 20%, it means 10 crore is raised by debenture. And the remaining 80%, the remaining 40 crore is raised by equity shares. Now, the equity share is issued at 25% premium. So the issue price is 125. And they have issued sufficient shares to collect this amount. Now you have to find out कि कितने shares issue करे हैं. You have to find out the number of equity shares that are issued. So you will divide 40 crore, the amount required, by the issue price. So 40 crore divided by 125, we have issued 32 lakh shares. We have issued 32 lakh shares. And shares are oversubscribed by 2 lakh.
It means you have received application for 32 lakh plus 2 lakh, 34 lakh applications are received. So applications received are 34 lakh. The issue price is 125. So total amount received is 42 lakh 50,000. Sorry, the total amount will be 42 crore 50 lakh. The total amount will be 42 crore 50 lakh. This is the total amount received. Now, the first question is, what is the total amount collected on application? आपको कितना पैसा मिला है application पे? So we have solved it a few seconds before. I told you that total applications received are 34 lakh and the issue price is 125. तो हमें एप्लीकेशन आई 34 लाख, एक शेयर का प्राइस है 125 रुपए, तो टोटल पैसा कितना आया था 42 करोड़ 50 लाख. दिस इज योर आंसर. द टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इज 42 करोड़ 50 लाख. एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो आपको केस स्टडी समझ आनी चाहिए. अगर केस स्टडी समझ आ गई, क्वेश्चन बेटा ऐसे हो जाएगा, लेकिन केस स्टडी समझ नहीं आई तो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा. तो सबसे पहले केस स्टडी समझ आनी चाहिए, उसके बाद ही आपसे क्वेश्चन होंगे. अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज बेस्ड ऑन द सेम केस स्टडी. तो ये इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं, हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स वर ऑफर्ड, हाउ मेनी इक्विटी शेयर वर इशूड. तो आपने कितने शेयर्स इशू करे थे? The answer is 32 लाख. हमने कितने शेयर्स इशू करे थे पब्लिक को? 32 लाख. तो ये भी हो गया. लो, कितना टाइम लगा? हार्डली 1 सेकेंड. केस स्टडी समझ आएगी, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा. सो हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स वर ऑफर्ड? The answer is 32 lakh. And we have calculated it here. आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने कैलकुलेट किया था 32 लाख. 40 करोड़ डिवाइडेड बाय इशू प्राइस 125. We have issued 32 lakh shares. So answer is D. 32 lakh shares are offered, are issued. 37 and 38, it is done. The first case study is done. Now, the remaining 3 questions, 39, 40 and 41. These all 3 questions are based on one case study. So let's see the second case study now, which is again very important. And in this, आपको बचपन की चीजें याद आ जाएंगी. आपको ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट याद आ जाएगा. तो चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, जिसके लिए मुझे गायब होना पड़ेगा. तो दिस इज योर क्वेश्चन. नाउ on 1st September 2020, 20 students of Modern College started their partnership in the name of Be Safe for selling sanitizers on digital mode. तो उन्होंने एक डिजिटल मोड पे सैनिटाइजर सेल करने के लिए एक पार्टनरशिप फर्म खोली है. Since they were good friends of each other, they were not having any explicit agreement. उनके पास कोई explicit agreement नहीं था, क्योंकि वो काफी अच्छे friends थे. All of them have agreed to invest 15,000 as capital. सब मिलके 15,000 इन्वेस्ट करेंगे. So 15,000 multiplied by 20, the total capital will be 3 lakh rupees. Then the books were closed on 31st March 2021, on which date the following information was provided. तो बुक्स क्लोज हो रही है 31st March 2021 को, and this information is given. अब यहाँ पे आपको सेल ऑफ सैनिटाइजर्स गिवन है. सबसे पहले आपको ये देखना है कि उन्होंने पार्टनरशिप कब स्टार्ट करी, 1 सितंबर को, और बुक्स कब क्लोज हो रही है 31st मार्च को. तो आपका जो टाइम पीरियड है ना बेटा, वो कहाँ से आएगा, 1 सितंबर 2020
टिल 31 मार्च 2021 जो भी आप अकाउंटिंग करोगे वो किस बेसिस पे होगी? इस टाइम पीरियड के बेसिस पे. द पार्टनरशिप हैज बीन देयर फॉर 7 मंथ ओनली. अभी पार्टनरशिप को कितना टाइम हुआ है? 7 मंथ. सो डोंट टेक 12 मंथ, आपको लेने हैं 7 मंथ फ्रॉम सितंबर टिल मार्च. तो जो भी आप पे करोगे रेंट, सैलरी, वो कितने महीने की पे होगी? 7 मंथ की, 7 मंथ्स की. तो प्लीज कीप दिस इन माइंड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सैलरी 12 महीने की कैलकुलेट करेंगे, रेंट 12 महीने का कैलकुलेट करेंगे, जबकि पार्टनरशिप को सिर्फ 7 महीने हुए. अब आते हैं हमारे मेन चीज पे. सेल ऑफ सैनिटाइजर्स. आपने सेल करी सैनिटाइजर्स की 1,20,000. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 50,000. Remuneration to partner 2,000 per month. Okay. Rent to partner 1,000 per month. Manager commission 5,000. Closing stock 9,000. Fixed deposit 20,000. अब मुझे ये बताओ, क्या हमें क्लोजिंग स्टॉक की जरूरत है? डू वी नीड द क्लोजिंग स्टॉक? द आंसर इज नो. अब आप बोलोगे मैम ये क्यों नहीं चाहिए? तो द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज, फॉर्मूला क्या था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का? बचपन में किया था, याद करो. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो ये था फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलरेडी एडजस्टेड इन दिस. क्लोजिंग स्टॉक तो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, तो अब आप इसको इग्नोर करोगे. तो सीबीएसई देख रहा है कि आप 11th में पढ़ के आए हो या नहीं पढ़ के आए, आपकी जो फाउंडेशन है वो कैसी है. 11th में पढ़ाई करी है बच्चों या नहीं करी? तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? इग्नोर होगा. दिस वी हैव डन लॉट ऑफ टाइम्स इन क्लास 11th. नाउ सबसे पहले बनता था ट्रेडिंग अकाउंट बच्चों. सबसे पहले क्या बनता था? ट्रेडिंग अकाउंट. तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं. ये है आपकी डेबिट साइड, ये है आपकी क्रेडिट साइड. सेल ऑफ सैनिटाइजर कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड. बाय सेल 1,20,000. देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ रिकॉर्ड होगी? डेबिट साइड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50,000. अब और कुछ जाएगा नहीं ट्रेडिंग अकाउंट में, बिकॉज डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो गिवन नहीं है, वेजेस नहीं गिवन, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस नहीं गिवन. तो यहां से आपका जो जीपी है, ग्रॉस प्रॉफिट है, वो कितना आ गया? 70,000. दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट. अब ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा बच्चों? पीएनएल अकाउंट में जाएगा. तो यहां पे आप इसके नीचे बनाओगे पीएनएल अकाउंट. ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाएगा? पीएनएल अकाउंट में बाय जीपी 70,000. अब आपने पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया ग्रॉस प्रॉफिट 70,000. उसके बाद आप पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे चार्जेस, बिकॉज एप्रोप्रिएशन कहां जाएगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. पीएनएल अकाउंट में तो हम सिर्फ चार्ज रिकॉर्ड करेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. सो रेंट टू पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. मैनेजर कमीशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. So rent to a partner is 1,000 per month and we will do accounting for 7 month. हमें कितने महीने की अकाउंटिंग करनी है? 7 महीने की. So it will be 7,000. Rent you will record 7,000 on the debit side of P&L account. Manager commission record 5,000. So ये 5,000 यहाँ पे रिकॉर्ड होगा. आई डोंट हैव स्पेस हेयर,
So यहाँ रिकॉर्ड कर रही हूँ 7,000 रेंट एंड देन वी हैव रिकॉर्डेड मैनेजर कमीशन दैट इज 5,000. तो इसको हम अलग स्लाइड पे दिखा देते हैं. लेट्स रिकॉर्ड इट हियर. दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट. This is P&L account. In trading account, you have recorded sale 1,20,000. You have recorded cost of goods sold 50,000. 50,000 ही था ना? Then your GP, your balancing figure is your gross profit. ये आ गया आपका gross profit 70,000. अब gross profit transfer हो जाएगा P&L account में by gross profit 70,000. उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे रेंट और मैनेजर कमीशन. रेंट था आपका 7,000, 1,000 पर मंथ, so 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 7,000. मैनेजर कमीशन थी आपकी 5,000. नाउ 70,000 minus 12,000, your net profit is 58,000. Your net profit is 58,000, and this net profit will be transferred to P&L appropriation account. So this net profit will be transferred to P&L appropriation account 58,000. So net profit is 58, which is transferred to P&L appropriation account. And then your salary of partner will be recorded in P&L appropriation account. Salary is 2,000 per month and there are 7 months. So salary will be 14,000. This is the question, guys. यही आपका question था. And we have done it. अब चलते हैं आपके पहले MCQ की तरफ, जिसमें बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. बताओ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे. So in P&L appropriation account, we have transferred how much? 58,000. Net profit कितना आया? 58,000. So to P&L appropriation account, we have transferred 58,000. So here we have your answer. Answer is A. Answer is A. How much amount will be transferred to P&L appropriation account? 58,000. This was your net profit और यही transfer हो जाएगा. Coming to the second question. 39th question हो गया. Now coming on to 40th. So 40th question is, on 31st March 2021, salary to partner will be provided to partner. Salary will be provided to partner, but only out of remuneration. Salary will be provided only out of profits, reserves, accumulated profit, goodwill. So appropriation, salary क्या है? Appropriation है. Salary is an appropriation and appropriations are only provided out of profits. So salary will be provided but only out of profits. The answer is A. ये question तो easy था, 1 marks ऐसे ही मिल गया. This was your 40th question. And the last question is 41 question is, on 1st December, 1 दिसंबर को वन ऑफ द पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल. एक पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई 30,000 की एंड ऑल्सो एडवांस्ड अ लोन ऑफ 40,000 टू द फर्म. उसने फर्म को एक लोन दिया 40,000 का. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट पार्टनर विल रिसीव. तो
उनके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, दे डोंट हैव एनी एग्रीमेंट, सो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, and interest on loan will be provided at 6% per annum. इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा? 6%. तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय 4 month, because the loan is given on 1st December. So December, January, February, March, there are 4 months. So cancel it. 6 multiplied by 2, 2 multiplied by 2, 0 to 0 cancel. 400 multiplied by 2, your interest will be 800. So partner has introduced additional capital and partner has given loan. No interest on capital will be provided as they don't have any agreement. And interest on loan will be provided at 6% per annum. So the answer is 800. Your answer will be D, 800. So we have completed the question, guys. We have completed section C. अब यहाँ से आपने क्या सीखा कि आपको सबसे पहले केस स्टडी को ध्यान से पढ़ना है. चाहे केस स्टडी में एक्स्ट्रा 4 मिनट लगा देना, एक्स्ट्रा 5 मिनट लगा देना, पर केस स्टडी अच्छे से समझ आनी चाहिए, एक एक लाइन समझ आनी चाहिए. अगर 50,000 ईच है तो ईच पे ध्यान देना, क्वार्टर है, पर मंथ है, वो ध्यान से पढ़ना. केस स्टडी को एनालाइज करो, नोट्स बनाओ, एंड उसके बाद क्वेश्चन विल बिकम सुपर इजी. बट अगर केस स्टडी समझ नहीं आई है तो आपके जो 5 क्वेश्चन होंगे वो आपसे नहीं होंगे. So it is very important to understand case study. And with this, the class is over. We have completed section C of your question paper. Now in next class we will do the section D, जिसमें assertion based question है, match the following है. तो अगली क्लास में हम section D करेंगे. So if you guys want to attend more such classes with us, then you can subscribe our channel. And Vedantu is providing you something special on this Diwali. So what are we providing to you? आपको क्या मिल रहा है इस दिवाली पे? आपको हमारी मोबाइल ऐप पे मिलता है टेस्ट एंड मॉक टेस्ट. So you can download our mobile app. When you will download our mobile app, जैसे आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे, अपडेट योर प्रोफाइल. आपको हमारी ऐप पे जाके अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है, क्लास, स्ट्रीम, बोर्ड, यू हैव टू अपडेट ऑल ऑफ दीज. आफ्टर दैट गो टू माई कॉन्टेंट एंड गो टू टेस्ट सेक्शन, जहां पर आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे. यू विल फाइंड आउट सैम्पल पेपर, यू विल फाइंड आउट प्रैक्टिस पेपर, यू विल फाइंड आउट मॉक टेस्ट. सो अटेम्प्ट दीज टेस्ट so that your performance can improve, your percentage can improve. So this Diwali we are providing you mock test and practice papers on our mobile app. So go and download our mobile app quickly right now. And also, if you are facing any of these problems, if you are having doubts, you have no conceptual clarity, you need more assignments, more question, you are lagging behind in your class, you are looking for a revision plan, or if you prefer learning in Hindi over English, then you can join our live and interactive classes. तो आप हमारी live and interactive classes join कर सकते हो. You can join Vedantu's Term 2 courses, Term 2 batches, in which we will be providing you live online classes with high-level quizzes. Also, you can complete your entire syllabus of Term 2 with us. We will be teaching you everything. And we will also provide you handwritten notes so that you can revise your syllabus from time to time. Not only this, we will also solve your doubts instantly. All your doubts will be solved instantly. Then we will be providing you assignments also after every class. You will be getting topic wise assignment.
हर क्लास के बाद आपको असाइनमेंट मिलेगा सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इनफ क्वेश्चंस. देन we will take your mock test, we will conduct regular tests so that your percentage can improve. And along with all these benefits, we will be providing you chapter wise courses, micro courses at your fingertip for absolutely free. So you will be getting thousands of micro courses for free of cost. So all these benefits are provided in one course only. So go and take commerce term 1, term 2 courses right now, and all the links are provided in the description box. So go and find out the link in the description box. And if you are looking for a revision plan, then you can take term 1 crash course also. So again, the link for term 1 crash course is given in the description box. Let me show you that. This is your description box and these are the links. CBSE Commerce Term 1, Term 2, CBSE Commerce Term 1 Crash Course. So these are the links that you can refer to take our courses. And right now the crash course is available at flat 55% off. So go and enroll it right now because this is a limited time offer, guys, and this will end very quickly. So before this end, go and grab it. And for discount, you all can use my code SCPRO. So go and use my code to get it at flat 55% off. तो जल्दी से जाओ और ले लो ताकि आपकी टर्म 1 की तैयारी अच्छे से हो जाए. एंड इफ यू गाइज आर न्यू टू आवर चैनल और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और वो रेड आइकन को प्रेस कर दो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप और ढेर सारी ऐसी क्लास हमारे साथ देख पाओ. And yes, if you enjoyed this class, if you found this session helpful, then do hit the thumbs up icon, do like this video and do share it with your friends. So like, share and subscribe. And now I'll see you all in the next class. अब आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में. Till then, stay home, stay safe and stay healthy. So thank you everyone. Thank you so much for watching this class. Now see you all in the next class. Till then, bye bye. Good night and have sweet dreams. So bye all of you.